this is also going to be the crucible test to see how these Mandir Masjid cases are going to go on in the future, because this is not just about Varanasi, this is also with, as we can see, drumming up sentiment for the rest of the Mandir Masjid battles. And this is going to be very, very crucial to see what happens next, what will the law say, and what is the sentiment on the ground. Speaking of the sentiment on the ground, my colleague Chitra spoke to the locals of Varanasi to get a sense of their sentiment, what they feel, how they see this entire debate and this entire court case. Take a look at what the locals have told Chitra. बस हम लोग हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। आपको लग रहा है आ जाएगा? बिल्कुल 100% आएगा, और कोई भी भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वो सत्य, ये तो सत्य है ना, कोई झुटलाने वाली बात नहीं है मैडम, ये होना भी चाहिए। क्या सत्य है? अरे जो है वहाँ वास्तविकता, जो वहाँ का मंदिर है, जो शेष पड़े हुए हैं और जिस बात की सुनवाई हो रही है उस पर होना चाहिए बिल्कुल। आज आपको लग रहा है कि मामले को जिला अदालत स्वीकार कर लेगी कि इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना जाए, नहीं माना जाए? एकदम माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, सत्य है और वो पक्ष में होगा, हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा। मुस्लिम पक्ष है वो नहीं मानता है आप लोगों की दलील? अब वो तो एकदम नहीं मानता, को भी नहीं मानने को तैयार है, वो तो किसी चीज को नहीं मानने को तैयार है। जहां वहां पे बाबा विश्वेश्वर की हम लोग पूजा करते थे हमारे पूर्वजों ने, और वहां पे वो हाथ धोते हैं, तो उसमें ये क्या कहना है? वो तो कहते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग मुंह से कुल्ला करेंगे, हाथ धोएंगे, वजू खाना है वहाँ पर, वजू हैं। वो जो शिवलिंग की तस्वीर से आप लोग मान के बैठे हैं वो शिवलिंग ही है। नंदी बाबा का मूर्ति आप देख रही हैं, वो किधर देख रहे हैं? आप अगर मंदिर गई हो तो मंदिर में देखिए कि नंदी बाबा उसी शिवलिंग की तरफ मुंह करके हुए बैठे हुए हैं। मान रहे फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है। क्या बात है, निश्चित है, वो फव्वारा नहीं, वो बाबा शिवलिंग है, बाबा विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है। And while we see the sentiments on the ground, the crucial issue is also of the law. What does the 1991 Places of Worship Act say? Is there a bar on these petitions as well? Because the Hindu petitioners claim that the temple has always existed and all they want is restoration, while the Muslim petitioners say that even a survey will critically change the religious character of that entire premises, and what the Hindu petitioners are asking for is effectively to remove the mosque, which is something that cannot be done. My colleague Sneha is in the studio with us, looking at all the arguments and counter-arguments that happened. What is the court really looking at? Over to you, Sneha. All right, thank you so much for that. Nisha is getting us all of those details from the Gyanvapi complex. But what is the court really going to be deciding on? Let's take a look. If the Hindu side's plea stands, if the Hindu side's plea is barred by the Shrine Act, this is something that the court is going to be looking at. If the Hindu side's plea can be heard at all, legality or Shringar Gauri worship plea, and also if the Muslim side's arguments hold any water. Back to you, Anisha.